Hello everyone, how are you all? So welcome back to my channel. My name is Fateh और आज मैं आपके सामने आरपीए को कैसे असेस करते हैं इन सिंपल टर्म्स बताने की कोशिश करूंगा. सो व्हाट इज एन आरपीए? ये कुछ सालों से ये नाम हर जगह है. इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, ये है क्या? व्हाट इज दिस? सो आरपीए का फुल फॉर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर रोबोट जो हम रन करते हैं विच मिमिक्स ह्यूमन एक्टिविटी. यानी जो ह्यूमन एफर्ट है, मैनुअल एफर्ट है, इट मिमिक्स दैट एंड इट क्रिएट्स ऑटोमेशन ऑन द यूजर इंटरफेस. राइट, सो ये आरपीए का है. सो आरपीए को हम यूज कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स में. उसके बेनिफिट्स मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरपीए का जो एक प्रोसेस है उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं इजीली, और उस क्या वो कैंडिडेट इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू डू एन आरपीए और नॉट. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ प्रोसेस, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज. राइट, गिव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रोसेस. राइट, व्हाट इज योर ऑटोमेशन ऑब्जेक्टिव? whether it's an FTE saving, any full-time employee saving, or it's reducing an error, or it is about time savings, right? So we do the due diligence and understand what is the objective of automation, and then you have 9 simple steps according to me on the parameters which you can assess an RPA, right? So first one is whether it's a rule based or it requires a judgment. The reason because is, and you can plot in a scale of 1 to 5. So 5 will tell you that it is completely rule based and it does not often require a judgment, because if it requires a judgment then you will have to put in intelligence, right? So RPA it's an activity which just mimics a human effort, so it requires a minimal effort where in terms of judging aspects, right? So if the process is more about judgment, then it's not a potential candidate, right? So the first thing is about whether it's a rule based or if there is a lot of judgment required there, right? Second thing, is that process a manual and repetitive? Can you repeat a process, right? Are there a lot of manual steps in that, right? So that's the second thing. The third thing is that कि हमारे पास data जो है, is it in structured format? Because if the data is not in structured format, it is not a viable candidate for an RPA, right? So structured format में यानी the data is easily available in the format within a database DB, and which can be analyzed easily, right? So this is the third point. The fourth point is, do we have data in digitized form, right? इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है, कैन इट इजीली रीड द डेटा? अगर वो नहीं है देन इट्स नॉट अ वेरी वायबल कैंडिडेट फॉर आरपीए, राइट? सो पांचवा पॉइंट है कि क्या वो जो प्रोसेस है वो उसमें उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी जो ट्रांजेक्शन्स उसमें हो रहे हैं, क्या डज दैट प्रोसेस हैव अ हाई ट्रांजेक्शन? इससे क्या होगा ना कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो निकल के आएंगे, and the effort which you're putting an RPA there will be much more amplified, right? So high volume and frequency is a very big factor as well. The next one is stability. यानी कि ये जो प्रोसेस है वो क्या स्टेबल प्रोसेस है या फिर वो प्रोसेस चेंज होने वाला है इन द न्यू फ्यूचर? बिकॉज इफ इट गेट्स चेंज्ड इन द न्यू फ्यूचर देन अगेन यू विल हैव टू चेंज इट, राइट? So the stability is an important factor. You would want to put an RPA, which is a cost, right? And then you would want to do that activity, but if the process is not that stable, it's not a potential and viable candidate to go ahead with, right, at that moment, right? And then different factors as well, right? So 6. Now what is the seventh one, right? कि इस प्रोसेस का करंट स्टेटस क्या है? व्हाट इज द एज इज प्रोसेस करेंटली, राइट? क्या इसमें एरर्स हैं? क्या इज इट प्रोन टू ह्यूमन एरर, राइट? सो 7. फिर 8वां पॉइंट क्या है कि कैन वी मेजर इट इफेक्टिवली, राइट? कैन वी मेजर कि ऑटोमेशन के इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? कैन दिस प्रोसेस बी इजीली मेजर्ड, राइट? दिस इज 8. 9th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कि whether the skills of the employee in that process who is managing the process can be transferable. The reason for this is that when you put an RP over there, right, so the objective is reducing an FTE or time savings or error reduction, whatever might be for the company, right?
but the employee working on that process employees can be easily assigned to other tasks within the organization or the function, right? So these are the 9 my simple ways on how you can assess whether the process is a potential candidate for RPA or not. सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीए के बेनिफिट्स क्या हैं, हाई लेवल बेनिफिट्स। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल आउट देयर कि सिंपल बेसिक वर्ड्स में हाउ यू कैन एनहांस, एंड देन बाकी तो वेब में आपके पास ही है, यू कैन गो एंड रिसर्च एंड स्टडी ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट? सो इफ यू लाइक माई वीडियो, please click the like button, please share the video, please subscribe the video, and I'm looking forward to much more in the coming days. Thank you very much and have a great day. Bye bye.